Hello friends, welcome to our YouTube channel Exploring Goals. If you are new, then do not forget to subscribe and hit bell icon so that you will get all my live and uploaded videos. Friends, in this short session, we will discuss one questions that was asked in the contractual high school teacher examination. So let us see the question. Question thila psychology. Walter Doyle created six characteristics that reflect a classroom's complexity. Which of the following are the characteristics? तो ये जो क्वेश्चन थिला छटा कैरेक्टरिस्टिक्स देइथिले क्लासरूम कम्प्लेक्सिटी को रिफ्लेक्ट करबा विषय रे साइकोलॉजिस्ट वाल्टर डॉयल तो तांको एक्चुअली साइकोलॉजिस्ट वाल्टर डॉयल करो डिटेल्स रे आज रो सेशन रे रहबो डिस्कशन तो यार आंसर होची मल्टी डायमेंशनल एंड साइमल्टेनियस सिक्स कैरेक्टरिस्टिक्स जहाँ देइथिले वाल्टर डॉयल क्लासरूम कम्प्लेक्सिटी ऊपर ता भितरु मल्टी डायमेंशनल एंड साइमल्टेनियस ये गोटे पार्ट थिला बाकी किंतु से प्रेडिक्टेबल एंड ऑर्डर कंट्रोल्ड एंड इजी मैनेज्ड एंड क्विट या विषय रे किछि कहि नथिले सिक्स कैरेक्टरिस्टिक्स कोन थिला डिटेल रे जानिबा वाल्टर डॉयल कर ता पूर्व जानिबा इफेक्टिव क्लासरूम मैनेजमेंट ऊपर तांकर कोन सब मत थिला इफेक्टिव क्लासरूम मैनेजमेंट मैक्सिमाइजेस चिल्ड्रंस लर्निंग अपॉर्चुनिटीज ऑन द अदर हैंड a saturated, complex, and potentially chaotic classroom environment can lead to problems that can interfere with students' education. The student education ପାଇଁ ସବୁବେଳେ simplified, dynamic, energetic, flexible, fertile atmosphere and classroom environment दरकार. Therefore, educational psychologists believe that fostering a positive classroom environment is very important. That's why it is believed by all educational psychologists that a good classroom environment is important for the harmonious development of the children or the learners. To be able to manage a classroom, we must first understand how it works. So, केमिति काम करिबो गोटे क्लासरूम मैनेजमेंट को वेटा आमे अनुकरण करने द्वारा को टाइप तार प्रभाव रहिबो से विषय जानिबा दरकार वी मस्ट एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स दैट कैन कॉज प्रॉब्लम्स इन क्लासरूम सो देखिबा वाल्टर डॉयल्स करो सिक्स कैरेक्टरिस्टिक्स कौन थिला साइकोलॉजिस्ट वाल्टर डॉयल क्रिएटेड सिक्स कैरेक्टरिस्टिक्स दैट रिफ्लेक्ट ए क्लासरूम complexity. In addition, he also explained how these characteristics relate to manifestation of problems. तो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करबा पई क्लासरूम को मैनेज करबा पई कोन सब कैरेक्टरिस्टिक्स दरकार जहा प्रॉब्लम को सॉल्व करि परिबो एंड लर्नर रो ऑल राउंड डेवलपमेंट करि परिबो. Knowing these characteristics we will help us understand classrooms and how teachers should manage them. So देखिबा कोन सब कैरेक्टरिस्टिक्स रे जो क्वेश्चंस रे हमर ऑप्शन नथिला मल्टी डायमेंशनल एंड साइमल्टेनियस ए फास्ट दीटा पॉइंट को से फ्यूज करके गोटे ऑप्शन रे रखिथिला. So classroom are multi-dimensional. Classrooms are the settings of many activities. They house academic activities, reading, writing, mathematics, etc. Social activities, games, talking with friends, etc. ये सब जिनस जाउची तो classroom are multi-dimensional. ये होची फर्स्ट पॉइंट जहाँ देइथिले छटा इंपोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट ता भितर मल्टी डायमेंशनल गोटे सेकंड को जदि दिबा जोटा ऑप्शन रे थिला हमर साइमल्टेनियसली these activities occur simultaneously. So multidimensional जो activities अच्छी different activities reading, writing, mathematics, games, talking with friends is simultaneously हुए at the same time in a orderly manner हुए. In a classroom activities occur simultaneously. For example, a group of students may be writing while another group discusses a task with the teacher. So गोटे ग्रुप कौन करूछंती writing लेखिबारे व्यस्त अछंती गोटे ग्रुप डिस्कस करूछंती टीचर सहित. On the other hand, perhaps a student is bothering another while others stuck to each other. तो किए गपु थाई पारंती किए डिस्कस करू थाई पारंती किए लेखु थाई पारंती तो ये साइमल्टेनियसली हुए मल्टी डायमेंशनल क्लासरूम एक्टिविटीज सब साइमल्टेनियसली हुए बुझियो छी. नेक्स्ट थिंग्स हैपन क्विकली इन क्लासरूम्स एंड ऑफन रिक्वायर एन इमीडिएट रेस्पॉन्स. तो जहाँ होची तारो इमीडिएट रेस्पॉन्स भी दरकार क्विकली किछि जिंस हो जाए एंड हमकु से हिसाब रे रेस्पॉन्स दबाकू पड़े एज ए टीचर. As experienced teacher know many conflicts can rise simultaneously without prior notice.
बिना नोटिस रे मेनी कॉन्फ्लिक्ट्स आसी जाई पारे क्लासरूम भितर सो ता प्रति मध्य केयरफुल हवा दरकार फॉर एग्जांपल टू स्टूडेंट्स मे बिगिन टू आर्ग्यू ओवर ए नोटबुक ओके सडनली नोटबुक पर आर्ग्यूमेंट आसी जाई पारे तो क्विकली बहुत गुडे जिंस हो जाई पारे कार किए काका भितर आर्ग्यूमेंट हो जाई पारे काका भितर झगड़ा हो जाई पारे किए एटा मो पेन तू कहीं कि नेलु ए टाइप रो कंडीशंस जहां सब हमर आसे नॉर्मली क्लासरूम भितर तो थिंग्स हैपन क्विकली एंड ताकू मैनेज करबा को पड़े इवेंट्स आर ऑफन अनप्रेडिक्टेबल ऑल्दो टीचर्स thoroughly plan well organized daily activities हमें daily activities lesson plan को prepare करके जाऊ छे but unforeseen events always pop up like for example an alarm may go off a computer may not work a heating unit may break down so lab रे जेतबे काम करू सडनली गोटे कंप्यूटर काम न करि पारे कोनोसी इक्विपमेंट ब्रेक हो जाई पारे so there are different unpredictable things may happen during the classroom activities next there is little privacy due to fact of classroom are public places classroom is a public place means all students are there students observe everything that happens whatever you are doing and anybody doing in the classroom is observed by others so it is a public place the teacher's way of managing the classroom will be continually judged by class the class रे जेते students अछंती क्लास सब बेले जज करि पारिबो टीचर केमिति को वे रे मैनेज करछंती क्लासरूम को सो बी वेरी केयरफुल एज ए टीचर व्हाइल मैनेजिंग द क्लासरूम वैल्यू जजमेंट्स ऑन फेयरनेस और इनजस्टिस ऑफ टीचर्स एक्शन विल अफेक्ट द क्लास तो जदि हमें वैल्यू जज करूचे कोनोसी प्रकार रो जजमेंट करूचे कोनोसी प्रकार रो व्हाट डिफरेंशिएट करूचे हमर लर्नर मानन को स्टूडेंट्स मानन को बा इनजस्टिस करूचे का सहित ताहले एटा प्रभावित करिवो अफेक्ट करिवो कंप्लीट क्लास को क्लासरूम्स हैव हिस्ट्रीज लाइक स्टूडेंट हैव मेमोरीज ऑफ व्हाट हैपेंड इन द क्लास ऑन प्रीवियस ओकेजन्स अगरु एही सिचुएशन रे कोन हेतिला से स्टूडेंट्स माने मन रखि थांतु तो नुवा सिचुएशन रे जदि हमें कोनोसी प्रकार अदर एक्टिविटीज कर दोचे अनदर फॉर्म ऑफ एक्शंस नै जोचे ताहले इट विल अफेक्ट द मेंटालिटी ऑफ द लर्नर्स understanding how the past influence the future is essential for understanding classroom functioning it's important that teachers know how to manage their classrooms today in order to influence tomorrow's learning तो आज एमिति मैनेज करथिबा जेमति आगो को मध्य लर्निंग रो तार लर्निंग ऊपर तार खराब प्रभाव न पड़िबो so these are the different points friends जेमति हम डिस्कस कले मल्टी डायमेंशनल simultaneous quickly things happen quickly events are unpredictable there is little privacy classroom have histories okay now let's move on how to manage a classroom a teacher must take advantage of the first day and weeks of the school year to try to manage their classroom during this period they must do two very important things talk about classroom rules procedures with the class to promote cooperation so classroom rules and procedures विषय रे कहिबा rigid rules अछि त माने न जे rigid there should be some rules to manage the classroom किछि रूल रेगुलेशंस भी रहबा निहाती दरकार okay next get students to actively participate in learning activities this way you foster a positive learning environment so the initial days of your classes as a teacher you have to manage well the management well kariba rules procedures classroom ro bitar विषय रे कहिबा cooperation आनिबा means rapport build करिबा students मानको सहित connection भलो बनेबा and learning activities रे participate करेबा so that तांकर learning environment भलो positive learning environment पाई परिबे classroom management requires year round effort वर्ष सारा इफोर्ट दरकार केवल गोटे दिन इफोर्ट देकी बाकी समय रे चुप रही गले बा सोई पड़ले हबनी having a good start won't cut it गोटे भलो स्टार्ट कर देकी तापर सोई जिबा तो या माने न हो जे बेटर मैनेजमेंट हे जिवो ऑटोमेटिकली throughout the school year it's essential for the teacher to respond to all the demands that arise throughout the year जहाँ भी डिमांड अच्छी लर्नर मानकर आम ताकू सॉल्व करिबा if this does not happen discipline problems will hinder student learning तापर जदि ये न हला कंटीन्यूअसली हमर रेस्पॉन्ड कंटीन्यूअसली इफोर्ट न रहिला ताहले ये ऑटोमेटिकली डिसिप्लिन को hamper करिबो indiscipline को generate करिबो to meet these demands teacher must have two main goals in mind what are they help students dedicate more time to learning and less time to meaningless activities तो स्टूडेंट्स मान को सब बड़े अधिका टाइम डेडिकेट करबा को कहिबा टू लर्निंग
and less time to meaningless activities. So, management of academic time is essential for both the teacher and students. There can be many distractions in classrooms that can make students waste time and thus hinder their learning. The learning upare bad impact affect kariba learning ko. The teacher must encourage students to remain motivated and not choose other activities over learning. And the last points को जीवा वर्तमान मूव करिवा तो ये एक्चुअली केवल ए क्वेश्चन रो आंसर नो बट क्लासरूम मैनेजमेंट ऊपर डिटेल्स अछि prevent students from developing problems. Students are susceptible to academic and emotional problems. A cold and distant classroom can make them feel disconnected. So ସବୁବେଳେ connected ରହିବା learners ମାନଙ୍କ ସହିତ and atmosphere को energetic କରିବା. In addition, we must bear in mind that the presence of developmental difficulty or disorder affects both individual and group performance. Therefore, classroom management also consists of fostering a positive environment where students feel comfortable and motivated. So, ଗୋଟେ positive environment ସବୁବେଳେ ଦବା ଯୋଉଠି ସେମାନେ motivated and comfortable ରହିବେ. Okay, finally, there must be an evaluation system in place to which whether a teacher keeps these goals in mind or not. Continuous and exhaustive evaluation keeps teachers see possible mistakes and allow them to correct them quickly. So continuous and comprehensive evaluation CCE तो वर्तमान आसी जाइए but continuous and exhaustible evaluation हवा दरकार teacher मानक द्वारा so that any mistakes can be solved quickly. It would be responsible not to adequately monitor whether classroom management is in accordance with the students' needs. Thank you. Normal is boring, so be unique on your own way, be special, and create special environment for your learners in the classroom and for the people in the society. Thank you everyone for watching. बहुत बहुत धन्यवाद. सब्सक्राइब करी बेल आइकन हिट करने को भूलिबनी. लाइक शेयर कमेंट निश्चय करियो फ्रेंड्स मानक सहित. थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग. हैव अ ग्रेट डे. टेक केयर. जय जगन्नाथ.